Very good morning student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School Rajoda. Student, today I am taking exercise number 5.3 second half part. In the previous video I take the exercise number 5.3 first half part, ठीक है, of the chapter number 5 trigonometrical functions class 11 mathematics. A simple question, मैं हर क्वेश्चन में सिंपल बोलता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आपको भी सिंपल लगेगा. इन ए ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट कोस ए प्लस बी प्लस कोस सी विल बी इक्वल ऑफ 0. ठीक है, क्वेश्चन इज वेरी स्मॉल बट वी टेकिंग अ concept about triangle. What is the mean of the triangle? In this case let we consider a b c is a any triangle. That means here we taking the angle a, angle b and angle c, angle a, angle b and angle c. Now this part will be known as pi minus a. ठीक है, आप बोल सकते हैं सर ये पूरा जो होगा विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री. तो अगर जो ये अंदर वाला पार्ट a है, एंगल a will be equal of pi minus a, such that similarly we told pi minus b and finally we told pi minus c. ठीक है, याद रहेगा. इन द केस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी बोथ आर द वर्टाइसेस, ठीक है, विच नोन एज द एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. सो दिस पार्ट विल बी इक्वल ऑफ पाई माइनस ए, पाई माइनस बी एंड पाई माइनस सी. स्टूडेंट, ठीक है, वी हैव टू प्रूव सॉल्यूशन. ठीक है, वी हैव टू प्रूव cos a plus b plus cos c will be equal of 0 in triangle ABC. What is the mean of the triangle ABC? ठीक है, you know that about the class 8th, class 7th, class 9th, class 10th, the sum of all angle in triangle will be equal of 180 degree. So we can, in a triangle ABC, we can say a plus b plus c will be equal of 180 degree. A plus b plus c will be equal of 180 degree. Now a plus b, ठीक है, so a plus b will be equal of pi minus c. ठीक है, we taking cos in both side. Why we choose the cos? According to the condition of question, cos a plus b, cos c. That means we choose cos in both side. That means cos a plus b will be equal of cos pi minus c. That means cos 180 minus theta. ठीक है, ठीक है, आराम से देखेंगे स्टूडेंट. cos 180 थीटा, cos 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल ऑफ माइनस cos थीटा. बट वाई सर? ठीक है, आप मुझसे बार बार पूछेंगे सर कैसे, तो मैं आपको बहुत अच्छे से याद दिलाऊंगा. 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड 360 डिग्री. आपको याद है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. ठीक है, हियर 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा. इन द केस ऑफ द 180, 180 माइनस थीटा एंड 180 प्लस थीटा. इन द केस 360, 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा. कुछ छूट गया है क्या सर? 270. दैट मीन्स 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा. लास्ट टाइम आई टोल्ड ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी. ऑल दैट मीन्स ऑल आंसर्स विल बी पॉजिटिव. एस दैट मीन्स साइन एंड साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक. टी दैट मीन्स 10 एंड 10 का ऑपोजिट होता है कोट. सी दैट मीन्स कोस और कोस का ऑपोजिट होता है सेक. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए. 90 माइनस थीटा, पहले मैंने आपको कल बताया था, इन द केस ऑफ द 90 आंसर विल बी सेम. याद है ना? ठीक है, इन द केस ऑफ द 180 एंड 360 आंसर विल बी सेम. इन द केस ऑफ द 90 एंड 270 आंसर विल बी ऑपोजिट. 180 minus theta, that means cos theta, but 180 minus theta in the second part, here sin and cos are positive. That means sin or cosec positive, otherwise we take the negative. So cos a plus b will be equal of minus cos theta. Sir, cos a plus b will be equal, नेगेटिव इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? ठीक है, नेगेटिव कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव cos c. सो ठीक है, अगर जो हम क्रॉस चेक करें दैट मीन्स cos a प्लस बी विल बी इक्वल ऑफ cos c. वी हैव टू प्रूव, और हमने प्रूव कर दिया.
Student, now we taking the another question. In triangle ABC we have to prove cos A plus B by 2 will be equal of sin C by 2. देखिए स्टूडेंट, ठीक है, you know that in triangle ABC, in the case of the triangle ABC, the sum of all angles will be equal of 180 degree. That means A plus B plus C will be equal of pi. But according to the condition of question, here A plus B divide by 2. That means we need 2 in the form of denominator. So we dividing by 2 in both side. A plus B plus C by 2 will be equal of pi by 2. But आप देखें A plus B चाहिए. That means we separately A plus B by 2 plus C by 2 will be equal of pi by 2. ठीक है, we take A plus B by 2 in the form of LHS and pi by 2 minus C by 2. What is the demand of question? A plus B by 2 as an angle of cos. So we taking the cos in both side. Cos A plus B by 2 will be equal of cos pi by 2 minus C by 2. Student, cos A plus B by 2 will be equal, ठीक है, just focus, cos 180 minus theta, cos, sorry, not a 180, pi by 2, that means a 90 minus theta, cos 90 minus theta. In the first part, all answers will be positive. That means the answer will be positive. And ठीक है, एंड 90 माइनस थीटा, 90 that means another value cos convert into the form of sin theta. So answer will be equal of sin C by 2. ठीक है स्टूडेंट, चेकआउट करेंगे. ठीक है, वी हैव टू प्रूव cos A plus B by 2 will be equal of sin C by 2, hence proved. Student, next question in the form of the tan and cot. We have to prove tan A plus B whole by 2 will be equal of cot C by 2. Now solution is there. ठीक है, in triangle ABC, what is the mean of the triangle ABC? The sum of all angles will be equal of 180 degree, such that student focus on the question. What is the demand of question? A plus B in a single pair. ठीक है, avoid C. So A plus B plus C, firstly we divide by 2, will be equal of 180 divided by 2. Then separate A plus B by 2 plus C by 2 will be equal of 180 by 2. That means 90 degree. Now A plus B by 2 will be equal of 90. Positive convert into the form of negative. According to the demand of question, A plus B by 2 is an angle of tan or C by 2 is an angle of cot. That means we can choose in the form of tan or cot, both. So we taking the tan in both side. Tan A plus B by 2 will be equal of tan 90 minus C by 2. According to the condition of question, 90 minus theta. In the case of the 90, sin convert into the form of cos, cosec convert into the form of sec, and tan convert in the form of cot theta. 90 minus theta, in the first all answers will be positive. So required solution will be equal of tan A plus B by 2 will be equal tan 90 minus theta. That means कोट थीटा. क्रॉस चेक कर लेते हैं. ठीक है, tan A plus B by 2 will be equal of cot C by 2. Student, next question is there. If cos 120 degree will be equal of minus 1 by 2, then we have to find the values of the sin 120 and tan 120 on the basis of cos 120 degree. We know that cos 120 degree will be equal of minus 1 by 2, such that we have to find sin 120 degree. We know that about the identity, sin square theta plus cos square theta will be equal of 1. Sin square theta will be equal of 1 minus cos square theta. That means
sin theta will be equal 1 minus cos square theta. Theta replaced by 120 degree according to the demand of question. ठीक है, now cos sin 120 degree will be equal 1 minus cos square 120 degree. Cos 120 degree will be equal of minus 1 by 2. May be written minus 1 minus 1 by 2 whole square, such that sin 120 degree will be equal, ठीक है, minus 1 whole square, that means 1 1 जा 1 and 2 2 जा 4, 1 by 4, 1 by 4, that means 4 minus 1 by 4, that means रूट 3 by 2. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड. स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखेंगे. साइन 120 डिग्री वी हैव टू फाइंड द साइन 120 डिग्री. वी यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल ऑफ 1 कोस स्क्वायर थीटा convert into the form of minus cos square theta square convert into the form of root. We put the value of the theta will be equal of 180 degree, cos 180 will be 120 will be equal of minus 1 by 2 minus whole square convert into the positive LCM, then root 3 by 2. Now ठीक है, we have to find tan 180 120 degree. Tan theta will be equal of sin theta by cos theta. Theta replaced by 120 degree, so tan 120 will be equal sin 120 by cos 120. चलिए चुराते हैं वैल्यू. sin 120 will be equal of root 3 by 2 and cos 120 minus 1 by 2. स्टूडेंट लटकन से लटकन कैंसल, ठीक है, सो रूट 3 बाय माइनस 1 minus as a numerator, that is a answer, that is a another answer. I hope student you getting the solution. By the use of cos 120 degree we have to find the value of sin 120 and tan 120 degree. Next question is student, if A, B, C, D angles of a cyclic quadrilateral, what is the meaning of the cyclic quadrilateral? ठीक है, a quadrilateral which consist in any cycle are known as cyclic quadrilateral. आपने बचपन में पढ़ा होगा in the class 10th in the form of theorem. Angle A plus C will be equal of 180 degree and angle B plus D will be equal of 180 degree. ठीक है, according to the syllabus, according to the theorem of the class 10, the sum of opposite angle in cyclic quadrilateral will be equal of 180 degree. Student, what is the demand of question? If A, B, C, D angles of cyclic quadrilateral, given that, ठीक है, given that A, B, C, D be angles of cyclic quadrilateral such that we can write A plus C, angle A plus C equal to pi and B plus D will be equal of pi. Am I right? May I written? ठीक है, so angle A will be equal of pi minus C and B will be equal of pi minus D. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड. आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, वी हैव टू प्रूव कोट A प्लस कोट B प्लस कोट C प्लस कोट D इक्वल टू 0. नाउ वी टेकिंग द LHS. Why we take the LHS? In the case of the trigonometry, we take the larger term in between LHS and RHS. So, cot A plus cot B plus cot C plus cot D. Cot A that means pi minus C. B that means pi minus D.
plus cot C plus cot D. Student, we need about the identity cot 180 minus theta. In the case of 180 and 360, लास्ट वीडियो में मैंने बताया सेम आंसर, दैट मीन्स साइन इन द फॉर्म ऑफ साइन, कोस इन द फॉर्म कोस, सो कोट इन द फॉर्म ऑफ कोट थीटा 180 minus theta. In the second part, here the answers of the sine and cosec both are positive, other answer will be negative, so may be written in the form minus cot C minus cot D plus cot C plus cot D. I hope. ठीक है, cot 180 minus theta minus cot theta, cot 180 minus theta minus cot theta minus cot D cancel from the positive cot D, positive cancel by the negative, answer will be equal of 0, will be equal of RHS. So we can say LHS will be equal of RHS, hence proved. One more time I recall the question. ठीक है, what is the demand of question? If A, B, C, D angles of cyclic quadrilateral, here I draw a simple cyclic quadrilateral A, B, C, D. The opposite angles are A and C and B and D. That means by the property of cyclic quadrilateral, the sum of opposite angle will be equal of 180 degree. The sum of opposite angle will be equal of 180 degree. According to the कंडीशन ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cot A cot B. कोई सी भी दो वैल्यू निकाल लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू. आई चूज A एंड B, देन C कन्वर्ट इनटू माइनस C, D कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ माइनस D. नाउ ठीक है, वी replace A by pi minus C and B by pi minus D. Cot 180 minus theta will be equal of minus cot theta. Cot 180 minus theta will be equal of minus cot theta. Minus cot D cancel by positive cot D and minus cot C cancel by the positive cot C. Here answer will be equal of 0 and 0 in the form of RHS. So we can say LHS will be equal of RHS.